Hello you guys, welcome back to my channel, and if you are seeing this face for the first time, my name is Aishwarya Goyal, and if you have already subscribed to my channel, a big thank you. But if you haven't, किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है and you will get a variety of content. So make sure to subscribe and hit the bell icon to get notified whenever I post a new video. So वैसे तो आपको टाइटल से पता लग ही गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट मेकअप ट्यूटोरियल फॉर वैलेंटाइंस डे एंड दिस वीडियो इज ऑल्सो अबाउट हाउ यू कैन अचीव दीज टाइप ऑफ कर्ल्स ओवरनाइट. इट इज एब्सोल्युटली हीटलेस एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेक्निक आई ऑलवेज यूज. बाय द वे, लेट मी टेल यू, आई एम अ बिगनर एट मेकअप एंड द स्टेप्स आई एम गोना शो टुडे सूट्स मी दी बेस्ट एंड आई रियली होप कि आपको भी ये वीडियो हेल्पफुल लगे. सो इफ यू आर गोइंग फॉर अ वैलेंटाइंस डे डेट देन डेफिनेटली ये वीडियो जरूर देख लेना. एंड या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. तो शुरू करते हैं मेकअप, बट सबसे पहले इन्हें टाई कर लेते हैं. So the first thing I always do before applying makeup is apply face serum, and this is what I am using these days. This is Wow Skin Science Oil Free Caffeine Face Serum. इसके बारे में डिटेल में रिव्यू ना मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, सो वेट फॉर इट. एंड अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो. सो इसकी ना बस आपको 2 या 3 ड्रॉप चाहिए. And dab this all over your face. Next thing I'm gonna use is this moisturizer. This is again from Wow Skin Science and I just love this and इसे मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ. This is Wow Skin Science Coconut Perfecting Cream with Vitamin E. Next I'm gonna use this color corrector palette. This is from NYB and I am in a shade 05. This is Caramel at Theatre District and this is what it looks like. The shade I'm gonna use under my eyes is this one, and क्योंकि मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट हो रहे हैं, I'm gonna use this shade on those affected areas. Now moving to the next step, which is applying loose powder all over the face ताकि मेरा बेस मेकअप एकदम स्मूथ रहे. So this is what I'm gonna use. This is from Maybelline and I'm in a shade 25 medium and this is Fit Me Loose finishing powder. This is what it looks like. I'm gonna use this fluffy brush to apply this loose powder. Makeup I'm gonna do it later, but सबसे पहले करेंगे हम आई मेकअप because that's what I'm focusing more on. सबसे पहले I'm gonna conceal my eyelids and for that I'm using this concealer. This is from NYB. शेड यहाँ पे बिल्कुल मेंशन नहीं है, सब कुछ मिट चुका है. For transition shade I'm gonna use this palette. This is Hilary Rhoda. This is from Swiss Beauty and I'm in a shade 01 and the shade I'm going to use for transition color is this one. Next I'm gonna use this palette और इसे मैंने अपने Amazon haul में भी दिखाया था. If you are interested in watching Amazon haul then please check it out in my description box below and I button पे भी आपको लिंक मिल जाएगा playlist का, so definitely check it out after watching this video. Now moving to this palette, तो इसका जो मैं शेड यूज़ करने वाली हूँ वो है ये शेड एंड ये मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने आउटर कॉर्नर्स पे. Then I'm again gonna use another palette and this is Meet Your Match eyeshadow tray color board beauty glaze. ये भी मैंने Amazon से ही लिया है. The shade I'm gonna use today is this one. Since I'm going for Valentine makeup look, I'm gonna use this red glitter. Eyeliner I am using this Bella Wash liquid dip eyeliner and I am in a shade 01 Black Dale. So मैंने ऑफ कैमरा लगा लिए फॉल्स eyelashes. Now moving to the base makeup. तो मैं सबसे पहले यूज़ करने वाली हूँ ये फाउंडेशन. This is from Maybelline. This is Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. This is what it looks like and I am in a shade 120 Classic Ivory. और इसके साथ मैं मिक्स करने वाली हूँ ये हाइलाइटर. This is from Swiss Beauty and I am in a shade 01 Light Pink.
तो इसकी मैं 1 या 2 ड्रॉप्स मिक्स करने वाली हूँ इस फाउंडेशन के साथ, ताकि जो मेरी स्किन है वो थोड़ी सी ग्लॉसी, थोड़ी सी शाइनी लगे. सो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू. Now I am gonna use this makeup fixer from Swiss Beauty. It has aloe vera with vitamin E. इसे मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, जो मैंने अब तक मेकअप किया है बेस मेकअप वो अच्छे से फिक्स हो जाए, ताकि मेरा मेकअप केकी ना लगे. एंड देन वील मूव फॉरवर्ड. Moving forward, I'm gonna use this contour stick. This is from Bella Wash 13 Bronzy Buzz. Now I'm again gonna use this loose powder, ताकि जो मेरा बेस मेकअप है वो एकदम फ्लॉलेस लगे. Let it sit for few seconds and then dust it off. For blusher I am using this one. This is from My Glam K Play Strawberry Blush and I am in a shade 02 Strawberry. This is what it looks like. काफ़ी pretty shade है. जिस look के लिए आज मैं जा रही हूँ उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा ये. And for highlighter I am using this one. This is again from Swiss Beauty. This is Brick Highlighter and I am in a shade 04. And the shade I'm gonna use today is this one. थोड़ा सा रेड कलर and apply it on my lower eyelids. I am using this shade to highlight my inner corners. Now coming to the final step, which is applying lipstick, and this is for the very first time I am gonna apply red lipstick. मैंने कभी भी ऐसे bold lipstick नहीं लगाई, especially red lipstick. I always have this thing in my mind कि मेरे को bold lipstick सूट नहीं करेगी, especially red, pink वगैरह. But for the very first time I'm gonna try this and I hope कि सूट करे. So for lip liner I'm gonna use this one. This is from Bella Wash 24/7 Lip Definer and I am in a shade Inflamed. And this is what it looks like. Lipstick I am using this is from Purple Minis and this is what it looks like. मेरे को ना इसकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा सही लगी. Like look at this. इस तरीके से आपको ये मिलेगा. And क्योंकि ये लिपस्टिक मैट है, I'm gonna go ahead and apply this gloss. This is again from Swiss Beauty. This is Gloss Me Lip Gloss. मेकअप हो चुका है पूरा and now it's turn to reveal how my hair looks after this heatless overnight curls technique. So let's do this. This technique works really great for me and मेरी लुक के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा है. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये टेक्निक कैसी लगी, आपको मेरा मेकअप कैसा लगा and let me change into something sexy. First of all the best if you are going for a date on Valentine's Day. Lucky you. And yeah, with this we come to the end of this video. I really hope you enjoyed this video and this video was helpful to you. If yes, then please give this video a big fat thumbs up. Subscribe to my channel if you haven't. Hit the bell icon to get notified. Share it with your friends, family and all the loved ones. See you in the next video. Till then, bye.